तीन टाइप की स्टैटिस्टिकल सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, individual, discrete and continuous. Individual and discrete done. आखिरी continuous series also known as grouped frequency distribution. Discrete series is also known as ungrouped frequency distribution. Grouped frequency distribution. As compared to a discrete variable, a continuous variable can take any value in the interval. Discrete, एक finite value. This can take any value. A continuous series is that series which represents continuous variables showing range of values of different items of the series. Continuous series is also known as frequency distribution or a group frequency distribution or a series with class intervals or a series of group data. You should know the alternate names. In a continuous series, the measurements are only approximations and are expressed in class intervals, that is within certain limits. Here the classes are framed without any break from beginning to end. अब जैसे marks थे 10, 15, 20, तो there are gaps. 16, 17, 18 का है, नहीं है सर किसी के. Still there are gaps. Continuous series में without any break from beginning to end. Important terms. अब again जैसे मैंने बताया यहाँ पे और कुछ नहीं हो रहा, आपकी vocabulary building हो रही, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर का पर्पस, आपकी vocabulary building. Yes, second half of the chapter would be construction of various series as well, which will help you in measures of central tendency. But terms are important. Class. Class hereby means a group of numbers in which items are placed, such as 0 to 10 is a class. 10 to 20 is a class. Class, a group of numbers. The class should be clearly defined and should not lead to any confusion. 0 to 15, 10 to 20. अरे क्या मजाक हो रहा है? 0 to 15 और 10 to 20 तो overlapping है values. There should not be any confusion. Classes should be exhaustive and mutually exclusive. Exhaustive मतलब कोई value रह ना जाए. Mutually exclusive मतलब same value should not be appearing in two different classes. Mutually exclusive, so that a value of a variable corresponds to one and only one of the class. It should be exhaustive and mutually exclusive. Important terms. Class. That is a cumulative frequency distribution. Less than more than is a cumulative frequency distribution. It is not a frequency distribution. और हमें तो पता ही नहीं अभी लेस देन मोर देन क्या होता है. आपने पूछा, मैंने आपको बता दिया. दैट इज नॉट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे बात किसकी हो रही है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की. ओके, दैट इज नॉट अ statistical series in terms of a frequency distribution. That is a completely different category. A type, उसको बोलते हैं cumulative frequency distribution. तो यहाँ के characteristics उस पर apply नहीं होंगे. ओके, क्लियर है ना आपका डाउट? क्लास लिमिट्स द लोएस्ट and the highest value of the variable within a class is called the class limit. 0 to 10, 0 is the lower limit, 10 is the upper limit. 10 to 20 in that particular class. So class limit is the lowest and the highest value of the variable within a class. एक word important है. The in continuous series each class is located within two numbers. ठीक है, बाकी तो तुम्हें पता है कि lower limit क्या होती है, upper limit. बट मैं कह रहा हूँ define a class limit. पूरे टर्म उसमें मिस हो जाते हैं कीवर्ड्स. हमें लगता है हमने तो पूरा बता दिया. No, lowest and highest value of the variables within a class is called a class limit. Class interval, it is the difference. Keyword here is
द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट को L1 बोलते हैं, अपर लिमिट को L2 बोलते हैं। लोअर लिमिट को क्या बोलते हैं प्यार से? L1, अपर लिमिट को क्या बोलते हैं प्यार से? L2। ओके, अब यार कुछ लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो जैसे आप करते हैं वैसे करें। सब ठीक है ना? अजीब अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो गई, ध्यान से देखना। सिंबॉलिकली क्लास इंटरवल, अब जो क्लास इंटरवल है उसको कुछ लोग आई लिखते हैं, कुछ लोग सी लिखते हैं। बेटर है आई, ज्यादा कॉमनली यूज क्या होता है? आई फॉर क्लास इंटरवल। सी आगे जाके हम देखेंगे वो कॉमन फैक्टर्स कुछ चीजें होती है न्यूमेरिकली यूज, तो सी उसके लिए यूज करेंगे। आई यूज करना फॉर क्लास इंटरवल्स, बट some authors use as I, some as C. Class interval important. Class interval is also known as magnitude, size, or the length of the class. Width of the class. Width of the class intervals. While constructing the frequency distribution, it is desirable that the width of each class interval should be equal in size. The size or width of the class interval can be determined by the largest value, number of classes desired, width of the। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शुरू से शुरू करते हैं।